Hello everyone, thank you so much for joining in. I hope you're doing good. I am Sonal Jain, your host, and I welcome you to a brand new episode of Gupshup with Pals. आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर दीपक पारिक, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. इस एपिसोड में हमने दीपक के लाइफ से जुड़ी उनसे कई सारी बातें की है, जैसे उनके ड्रीम्स, उनके लाइफस्टाइल, उनके चाइल्डहुड मेमोरीज, उनके बिजनेस क्रिएशंस और भी बहुत कुछ. मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत मज़ा आएगा देखने में और आप इस एपिसोड को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने पहले के एपिसोड्स को दिया है. So please like, share and subscribe to the channel if you haven't done it yet. And let's get into the episode now. Hi Deepak, how are you? I'm good, Sonal. Thank you for having me. It's my pleasure. It's okay. So How are you doing? I'm absolutely amazing. How are you feeling these days? क्या चल रहा है exactly? Deep question to start off with. Mixed emotions because we're doing a bunch of things together. So बहुत कुछ चल रहा है. But feeling good, yeah. Feeling a little tired, honestly. Not just now, but overall. So I'm thinking of taking a little break. But yeah, feeling good as well. That's nice. Firstly, congratulations for hitting 200K on Instagram. I saw it Thank yesterday. you. So, Thank you so I have much. done an episode with Shreyas and Richa in I guess mid 2022, and they both Okay. have suggested your name. So I was like कि यार ये तो करना चाहिए because बिल्कुल. बिल्कुल हाँ. How did you get in touch with them? See, Richa by Shreyas only, and I know Shreyas because we are working together. Okay. Okay. Yeah. Interesting. So they recommended my name to you? Yeah. Both of them, Interesting. that's the interesting part. They both have recommended your name, and it was like कि मुझे मेरे को लगा कि यार फिर तो मतलब जब एक जन करे तो that is different thing, but दोनों जन करे तो मैंने कहा कि यार फिर तो करना चाहिए बिल्कुल. This should happen, and we are here now. That's amazing, I think. Interesting. I'll thank them personally. I know both of them, so I'll thank them personally. They happen to be from my college itself. Okay. So Okay. I'll thank them personally. Amazing. Okay, so I'll start this conversation by asking you a very simple question. कि हाँ जी. what how you started your journey, and exactly what made you choose content creation as a profession? I mean, I was doing CA. So when I was, and I come originally, I'm from Calcutta, but I now put up in Bombay. So I was initially doing CA when I was in college and when I was in Calcutta. This is around 2014, 2014 is when I started doing CA. And I was giving repeated attempts. मैं attempts के attempt के बाद एक के बाद एक के बाद एक दे रहा था. And then I realized that after my repeated attempts, I was not really, I failed multiple times. And then I realized this is not something that I originally want to do. So I kept on doing, giving attempts again and again, only to realize that ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे को करना नहीं है. बस की बात तो छोड़ो, मेरे को करना ही नहीं है. So let's just focus on something else. So last attempt देने का बारी आया. I locked myself in my room and I thought कि नहीं बस अब हो गया. अब तो मैं बिंदास सिर्फ पढ़ाई करूंगा, जड़ के पढ़ाई करेंगे. अब तो रैंक लाएंगे सीधा. ठीक है, अब फेल तो होने का कोई चांस ही नहीं. But to my utter disappointment and to my parents' disappointment, they thought कि मैं पढ़ाई कर रहा था, but I was watching YouTube videos sitting inside my room. And I used to follow a lot of YouTubers back then. तो उस समय concept YouTubers का था. उस समय concept content creator वाला word आया ही नहीं था. So there was no word as content creator or a social media influencer. उस समय बस YouTuber था. So my first sales pitch, in fact, was in front of my parents, telling them that okay, I want to become a YouTuber. And they said great, fantastic, वो सब ठीक है, वो सब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. But साथ में सीए मत छोड़ो, साथ में सीए करते रहो. And I was like, चलो ठीक है, इनका बात मान लेते हैं. At least I'll get to start my content journey. So that's how it all began here. I think half of my credit goes to me pursuing CA, and that's how I entered the entire content space. That's great. I think
एक कहीं पे आके ऐसा लगता है ना कि मतलब कि व्हेन यू गेट स्टक इन समथिंग तो अपने हाँ आप जी। दूसरा रास्ता खुल ही जाता है. दैट्स हाँ इट. यार, मतलब ये तो आई थिंक दिस इज द रूल फॉर लाइफ. आई थिंक यू कीप ऑन नॉकिंग डोर्स एंड एटलीस्ट if you keep on knocking doors, at least one of them will open up automatically. Because if you persevere enough, I think God also is like कि हाँ भाई चलो ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसके लिए एक डोर तो खोल ही देते हैं, बाद में ये फिगर आउट कर लेगा अपने. So करेक्ट. pretty much aligned with you there. That's interesting. Okay, so coming to your businesses and all. So I know that हाँ you जी. had one of your businesses, early businesses called Career Kia. So हाँ जी. yeah, can you tell us about that? And what is that, one thing that you got from that experience that is helping you in and out now? So I began Career Kida when I was in college. Just to put it out there to the listeners who are listening to this podcast right now, I have not done a 9 to 5 job ever in my life till now. Okay? So that entrepreneurship Kida was right from college. और ये ना बाई चांस हो गया, ये बाई चॉइस नहीं हुआ, ये बाई चांस हो गया. सो द स्टोरी इज दैट आई वाज सिटिंग इन क्लास, क्लास बोरिंग चल रही थी, एंड आई वाज लाइक यार class boring hai, what do I do? I started playing bingo with my friends in college. And suddenly, like a couple of months later, there happens a local award show in my home city, Calcutta. And I was attending the show. I was like, ठीक है, देखते हैं क्या है. And there I met my then co-founder, Mohit. I met him in Calcutta, and I was like, "Chalo, theek hai, great, fantastic." And I happened to see this young guy pitching his multi-million business dollar idea, and I was like, "Great, fantastic, bahut badhiya. Let's see what he has in store." And I happened to be standing there, right? Just 19-year-old naive kid, did not know what to do in life whatsoever. तो मैं बस खड़ा था उधर, just to realize कि हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, सुन लेते एक बार. And that's when it struck me that he was also talking about the education space, and I had also something in mind regarding the entire education system in India. Because हम system को blame करते हैं, but हम ये नहीं realize करते that हम में भी बहुत गलतियां हैं, right? We also do not take full advantage of the system that is there at our disposal, right? तो वो भी बहुत बड़ा problem है. But we thought that system में भी बहुत बहुत loopholes है, उसको भी solve करना चाहिए. So then I asked him this first question कि यार Mohit, are you riding solo in this venture, or are you looking for a co-founder? He said, I'm currently riding solo, but I'm looking for a co-founder. So if you are on, like, willing to come on board, great, fantastic, we can speak. I was like, yeah, let's do it. So we had like multiple brainstorming sessions. We spoke for weeks and months, and then we decided that okay, let's hop on to the idea and let's start building Career Kida. So the idea was uh, providing career counseling in terms of offbeat courses. Okay. Because कन्वेंशनल कोर्सेज में बहुत सारा करियर काउंसलिंग ऑलरेडी होता है, राइट? वेदर इट इज सीए, सीएस, बीकॉम, एलएलबी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो उस केस में हर स्कूल, हर कॉलेज के पास एक काउंसलर होता है, तो वो उस पर काउंसलिंग होती है. बट व्हाट इफ समबडी वांट्स टू बिकम से अ पॉडकास्टर, और इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ रेडियो जॉकी, और a DJ, right? Or say a musician, a dancer, anything that's offbeat that's not really taught in school. So what if somebody wants to become that? So that was the idea. So we thought that we'll get an expert from that particular field and let that expert talk about that particular course or profession. And then we'll sort of build a business out of it. But what we did not realize, one of our biggest mistakes, because it was my first time running a business, so मेरे पास भी उतना experience था नहीं. So the first mistake that we as a unit made is we did not realize that every school or a college already has a career counselor on a contractual basis. Correct. वो कोई random काम लेके हारी as a counselor को hire नहीं करेंगे. Right? So that was the first mistake that we made, and that's when we realized that ये ना नहीं चलने वाला, इसको थोड़ा सा ठीक से करना पड़ेगा. So we pivoted. सबसे बड़ा startup term that you will hear from any entrepreneur is pivot, right? So we made the pivot, and then we decided, हमें एक और problem दिखी. We thought कि यार
लोग CS कर रहे हैं, and I was pursuing CA back then. My partner was a qualified CS being company secretary, just for the audience and not computer science. Okay, so my partner was a company qualified company secretary back then, and I was pursuing CA. तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये दिखी that people who are pursuing chartered accountancy or company secretaryship do not have a lot of idea about the practical aspect of that particular degree. उन्हें बस ये पता है कि हाँ ठीक है, मतलब डिग्री कर लो, सब कुछ कर लो, हो जाएगा एंड देन गेट अ जॉब. बट करेक्ट। उन्हें ये आइडिया नहीं है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है डिग्री का, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल वंस यू गेट दैट डिग्री. या तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो तुम कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हो, एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के, वेदर इट्स टैक्सेशन, वेदर इट्स GST, वेदर इट्स ऑडिट, वेदर इट्स लॉ, whatever that is, right? Or you can start your own firm and start practicing. But not a lot of people have idea about this. So we thought कि इसके regarding कुछ करते हैं. Let's start doing something in this field. So let's provide them profession specific practical training. Say for example, if you're doing CA or CS or BCom or LLB, what is the job opportunity or what is the opportunity available after you get that degree is what we're teaching while you're pursuing the degree. So that उस समय you have an idea कि आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हो उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, इवेंचुअली आप किस टाइप का काम करोगे, एंड दैट्स व्हाट वी गिव यू, दैट्स द काइंड ऑफ एक्सपोजर वी गिव यू. सो ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ भी सिखा देंगे और बोल देंगे कि आप ये कर लो हो जाएगा. वी टीच यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. We teach you, say, GST filing. We teach you how to check the MCA website. We teach you how to check the SEBI website. ITR filing कैसे होती है, and so on and so forth. So textbooks थे ही नहीं, because theoretical कुछ था ही नहीं. It was learning through a projector and a screen, right? And whatever they used to learn, they used to implement it by bringing their own laptops, and we used to teach them how to do it themselves. So that was the idea. हमने इस पे बहुत जड़ के काम किया, 3-4 साल अच्छे से काम किया. एंड आई थिंक इन 2020, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020, जब कोविड बहुत पीक कर रहा था, दैट्स व्हेन वी वर हिट बाय द पैंडेमिक. और काफी मतलब काफी नुकसान हुआ, बिकॉज वी आर नॉट गॉन ऑनलाइन बैक देन, right? We were completely operating out of a physical setup. So we took an exit. So I took an exit from the company. I took a backstep because it was not feasible for me at that point in time to keep focusing on that particular idea. So I took a step back, and then decided to go for my masters. Okay. So I had applied for my masters in 2020 end May. I had started applying for my masters. I got through Southampton Business School in the UK. So I took a flight in Jan 2021, landed in the UK, was there for about year and a half, studied entrepreneurship and management there, explored a little bit of UK there. वहाँ पे भी sadly lockdown था for the first 3 months. तो वहाँ जाके भी, वहाँ पहुँचने के बावजूद we had to do online classes till about April. So 3 महीने हमने online किया, but then April के बाद पूरा country खुल गया था. So we started exploring, we started understanding कि culture क्या है, jobs market कैसी है. I started working part time for a bit, understood how work happens, work culture कैसा है, pay rate कैसा है. वहाँ पे hourly pay rate है, यहाँ पे hourly pay rate नहीं है, right? तो वो difference है बहुत बड़ा. वहाँ पे बहुत इनिशियली बहुत कम एज से लोग काम करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे 24-25 तक भी लोग काम करना स्टार्ट नहीं करते, राइट? बिकॉज यहाँ का कल्चर ये है कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, काम बाद में करो. वहां पे 15-16 की उम्र से लोग स्टार्ट कर देते हैं काम करना, राइट? सो दैट इज हाउ द कल्चर इज देयर. कल्चर वहां पे मोर ऑफ आज, लाइक लिव टुडे, डोंट वरी अबाउट टुमारो. और यहाँ पे है कि वरी अबाउट टुमारो, लिव फॉर टुमारो, डोंट लिव टुडे. यहाँ पे सेविंग मेंटालिटी है, वहां पे खर्चा का मेंटालिटी, कि आज का दिन जी लो, कल हो ना हो पता नहीं, पर आज का दिन जी लो. यहाँ पे वैसा नहीं. यहाँ पे एटलीस्ट दे आर अज्यूमिंग कि कल तो हो गए, तो कल के लिए हम जिएंगे, आज भले ही जैसा भी दिन जाए. So learned a lot of things when I was living alone for the first time outside home. So massive learning there, massive learning curve through that experience. And yeah, came back, shifted to Bombay,
doing a bunch of things right now. Yeah, so that's how Career Kida and the entire journey regarding Career Kida happened. That's good. That's I'm sure you have, many memories of that uh, phase, and that is helping you out in and out right now also. Absolutely, यार मतलब business तो कभी waste नहीं जाता यार. I think even if I mean the business might click, might not click, that's a different issue, but the learning always remains, right? Yeah, And you have more learning from a failed business than a successful business. correct, So correct. you know, at least even if you don't know what to do, you now know what not to do, Not. and that is more important because there are bunch of things that can be done, Ah. but uh, if you don't know that okay ये नहीं करना है, Hmm. you're at least sure कि ये नहीं करना है. Let's not touch, let's not go in that territory because this is something we've tried and this is not works. So let's not do this. Let's Hmm. try and do something else, Hmm. right? So business might work or might fail, but I think the learning through the business stays always. So Correct. वो learning बाद में भी काम आती है. Even now that I'm running iceberg creations that you can see here, so even that learning stays during iceberg creations as well. Even if I plan to start say 5 more businesses in the next 20 years, this learning would always come in handy at that point in time. करेक्ट 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 दैट्स गुड. एक्चुअली आई थिंक कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को इग्नोर करते हैं, है ना, और चीजों से सीखना क्या, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है चलो हो गया. एंड कमिंग टू योर आइसबर्ग क्रिएशन, आई थिंक दैट्स अ मीडिया हाउस मे बी. हाँ इफ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ you जी, have also produced a film, हाँ Bengali जी, film. So what is हाँ जी, that? हाँ जी. What tell us all about that? So we Bengali movie start हुआ. I think the idea was that we knew the director from beforehand. So we sat the director. We understood कि यार, he said okay, we have an idea. Let's, if you want, let's, we can work together on this idea. Let's see what the idea is. So we thought हाँ ठीक है, let's सुनते हैं. सुनने में कोई अर्थ तो है नहीं. Let's Correct. listen from them. So we heard the idea. We figured out कि idea बहुत ही interesting है. We tried to address a social cause. Hmm. एक social message के ऊपर film है. The film is called Akorik. Akorik in Bengali means roots, the root cause. So the idea is that the film is based on family disintegration. Okay. So joint family disintegrating into nuclear families. That's the entire idea. And because both of us come from Calcutta, which is us as producers and the director, both of us happen to be from Calcutta, and we knew that Bengali community is one of the first two communities to have faced this disintegration process. So we started working on the entire disintegration process. We thought कि ठीक है चलो इसके ऊपर एक मूवी बन सकता है. Let's try and solve the problem. And we know that एक मूवी से काम नहीं बनेगा, right? But we can at least get the process started. So that's when we thought कि चलो ठीक है, let's start working together on this. Both of us came together to work on this idea. We happen to be working with the legends of modern day Bengali cinema, Rituparna Sengupta and Victor Banerjee. So we worked with them. That experience was phenomenal. I think that is something that we learned a lot from that experience. And yeah, the movie was released on 7th of April this year, last month. Um, Movie was out in theaters all across Calcutta, and then that's how we all started. Congratulations, first of all. Thank you, Sonal. अभी क्या चल रहा है? अभी कुछ और फिल्म प्रोड्यूस करने का है कि अभी क्या सीन चल रहा है उसमें? Yes, of course. I mean, currently we're not producing any films as we speak. But if we have any projects coming in, or if we have any ideas in the future, we're open to, of course, working on a film or a documentary or a web series. We don't mind working on any of those. But currently, as of now, there's nothing in pipeline. Of course, Iceberg का दूसरा काम चल रहा है. But as of now, there are no films and there are no documentaries or web series in the pipeline for now. But we intend to make more for sure. Yeah, best wishes for that, first of all. Thank you, Sunil. Okay. Thank you. So I saw one of your videos online where you were talking about your school days, how you got bullied and all, and how you overcame that. And then about your college days, how you were juggling between the things, experimenting with different things. So my question to you is, what was that constant, thought in your mind
that was there between all those stuffs, and does that comes to you now also? Yeah. So school में I was bullied when I was in class 5 or 6. I don't even remember. बहुत छोटा था मैं, और मेरे को याद भी नहीं है कौन सा क्लास था. But I think that अब because you're so young, 10, 11 years old, 5, 6 में आप क्या 10, 11 साल के होंगे और क्या. सो Correct. 10, 11 साल में यू आर वेरी नाइव, यू आर वेरी यंग, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और सडनली यू आर बुलीड व्हेन यू आर इन स्कूल. तो ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, राइट. एंड मेंटली बहुत यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड and you don't know what to do. Suddenly, when I was being bullied continuously for a period of time when I was in school, um, I I used to come back home very frustrated, and in fact, I told my parents one day that मेरे को स्कूल नहीं जाना. Okay. And they were like, "You're in class 5, you're in class 6, तुमको स्कूल नहीं जाना है." बचपन में ठीक है यार, when you are in nursery or when you are in lower kindergarten, ठीक है, you don't feel like going to school because you're like you're at home. Suddenly you're in a different environment, so you of course feel a little weird going to school. But class 5, 6 में तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना है. Is everything okay? Is there anything wrong with you? We'll try and solve it. And I did not share much. I just told them मेरे को स्कूल नहीं जाना. And they were also worried. They're like, yeah, we're sending him to the best school possible. And I was studying in the best convent school, probably of the country. And they said, yeah, we're sending him to the best possible school of the country. Why does he not want to go to school? Which problem hai? Let's try and solve it for him. And I was not very expressive back then. So I was like, nahi, जाने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. And I thought ठीक है, हो जाएगा, bully ठीक हो जाएगा, we will solve हो जाएगा, let's not push it. But it kept on happening, till a point that I had to share it with my parents that, okay, I'm getting bullied at school and I'm feeling scared to go to school. Like, what if I go to school and he bullies me again? Like, what if something happens to me because of that one person in school, right? So then that's when they said, ki, yaar, let's try and we'll come to school with you. We'll speak to the principal, we'll speak to the teachers, we'll address this issue, and we'll solve it for you. And I said, okay, whatever, if you feel like, come to school, talk to them. But they said that एक बार तुम जाके ट्राई करो, उस इंसान को सामने जाके बोलो कि लिसन, एनफ इज एनफ, ये सब और बर्दाश्त मैं नहीं करने वाला हूँ. I'm not going to take this anymore. Enough is enough. And be in your limits or whatever. And I was like, yeah, it's easier said than done. मतलब आप बोल रहे हो बोलने के लिए, he's been bullying me, so it's not very easy for me to do it. But चलो ठीक है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, third day I was like, screw it, let's just go walk up to him and tell him. And the moment I said that to him in his face, that's when he also got a little scared. He's like, oh, you know, let's not bully him further because he's standing up for himself, right? He's fighting for himself. And that's when he stopped doing this again. And he never did that again till the time we were in school, right? So I think वो डर बैठ गया था from a very young age कि यार अगर कोई डरा रहा है और तुम डर रहे हो तो वो तुम्हें और डराएगा, right? But if you take that first step, if you take that stand कि यार ठीक है, कोई ठीक है, डरा रहा है, but I will not, bow down to his fear. I will stand up for myself and I will do whatever the hell I want to do. So that's when I stood up for myself for the first time and I felt very liberated. And I was like, yeah, great, fantastic. This is something that might be a lesson for life. Who knows? So that simple, I think, incident taught me a lot in terms of standing up for myself. And that comes in very handy right now as well. Because बहुत बार क्या होता है कि when you start working professionally, whether in terms of content or whether you're doing your own business or whether you are doing 9 to 5 job, whatever you're doing, there will always be people who will try to pull you down or who will try to manipulate you or intimidate you. But in these tough times, you have to tell yourself that, okay, you are stronger than this and you will not let this happen to yourself. Because there will always be some people out there who will try to intimidate you, who will be like, "Arey yaar,
इसको दबाते हैं, ये डर रहा है ना, इसको और दबाते हैं. हम्म, Because once you show that you are scared, that's when people try and pull you down even further. करेक्ट। Because लोगों को पता है कि तुम डरता है, so let's try and pull him down further. So I think वो thoughts अब नहीं आते, but I think when I go back down the memory lane, I I think about how naive I was back then when I was in class 5 or 6, when I was 10, 11 years old. But I think now I know that simple incident back in school has taught me a lot as to, okay, this is something that happened with me and I need to stand up for myself. Because in professional life में हर बार होता है. Yeah. I don't know where you are in a professional journey right now, but as and when you keep progressing, you will realize that ये ना होते रहेगा. So this is very important. बहुत जरूरी है कि आप take a stand for yourself and make sure that you are not scared of taking that stand, because लोग डराएंगे आपको. So not get intimidated by others is something that is is something that you need to keep working on in future as well. तो अब वो डर नहीं लगता, but I think पहले बहुत डर था वो, because बहुत early age पे हो गया था वो चीज. और वो चीज मुझे ऐसा लगता है ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं वो आदमी को क्या बोलते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं आगे जाके, एंड दे गिव यू एन आइडिया कि भाई क्या नहीं करना है आगे जाके, एंड हाउ वी हैव टू बिहेव इन आवर, मतलब कीप योर बैरियर्स ऑन एवरी टाइम। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मतलब जैसा मैंने बताया ना कि भले ही तुम्हें ना बताओ कि तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या नहीं करना है. करेक्ट। और वो बहुत जरूरी चीज होता है, बिकॉज करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना है अगर वो पता चल जाए तो एटलीस्ट हम वो डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे. राइट. और शुरू से ही हमें ये इनग्रेन रहता है कि नहीं यार, एक टेम्पलेट बन गया है ना कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो. सो कभी कभी वो टेम्पलेट को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है. कभी कभी वो चेन को ब्रेक करके कुछ और करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो फिर हम कुछ डिफरेंट कर ही नहीं पाएंगे. अब podcasting is something different that you are doing, that I am also doing. I also started my podcast. So podcasting is something that you are also doing. I am also doing something that is not the common norm per se, right? In order to explain it to your family कि oh I am a podcaster, लोग 10 सेकेंड पॉज करके बोलेंगे वो सब ठीक है तुम, लेकिन करते क्या हो भाई, पॉडकास्टिंग होता क्या है. और चलो ठीक है, शौक के लिए कर रही होगी, पैसा वैसा कैसे कमाती है. Right, this is something that a lot of people will ask you. So I think you need to be strong enough to take that first step in breaking that chain and doing something for yourself. और वो बहुत जरूरी होता है. तो वो eventually you will figure out क्या करना है, but then in order to start that figuring out process you need to try a bunch of things. करेक्ट करेक्ट। और आपने जैसे भी पॉडकास्टिंग की बात की, तो हाउ यू स्टार्टेड, आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे करना है एंड आई नीड टू प्लान दिस आउट एंड डू इट, एक्जीक्यूट इट? आपने देखा है पहला मेरा एपिसोड की नहीं देखा, पहले ये बताओ. मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं आपकी, फुल एपिसोड नहीं देखा पर क्लिप्स देखिए. चलो पॉडकास्ट देख लेना मेरा. मेरा भी पॉडकास्ट लाइव हो गया. जो जनता देख रही है ये उनके लिए भी रिक्वेस्ट है. I've seen your trailer. सॉरी, I've seen your trailer. ट्रेलर देखा है, चलो बहुत बढ़िया. तो जनता जो देख रही है, प्लीज गो एंड फॉलो द चिल आवर ऑन स्पॉटिफाई. बट या आई थिंक वी कीप ऑन डिस्कसिंग. हमारी इंटरनल टीम में भी डिस्कशन होती रहती है दैट व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ क्रिएटर. कितनी होती है, 5 साल 10 साल 20 साल या 2 साल, लाइक नोबडी नोज. And the only conclusion that we have come to is shelf life आपकी कोई और डिसाइड नहीं करता, आप खुद करते हो. which means that आपका कंटेंट अगर रेलेवेंट है with the times that is there, so for example as per 2023 अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट है तो आप चलते रहोगे. तो आपको नेक्स्ट 10 साल 20 साल 30 साल नहीं सोचना है, आपको हर साल सोचना है कि 2023 में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपका कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं. फिर 2024 में गए तो आपका कंटेंट 2024 के हिसाब से रेलेवेंट है कि नहीं. अगर आप एक ही चीज पे रख लगा के बैठे रहोगे कि नहीं यार मेरे को तो यही कंटेंट करना है यही कंटेंट करना है, तो फिर
you know, you will become outdated very early, and you will, so you decide your shelf life. And as a creator, I think you need to keep reinventing yourself. अब पहले 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 यूट्यूब कंटेंट बहुत चलता था, राइट? लोग 15-15 मिनट का वीडियोस बना रहे हैं, 20-20 मिनट का वीडियोस बना रहे हैं, आधा आधा घंटे का वीडियोस बना रहे हैं। सडनली वो वाला कॉन्सेप्ट डाई आउट होने लग गया, लोग शॉर्टर फॉर्मेट पे आ गए। फिर टिकटॉक आ गया, तो टिकटॉक वाला ट्रेंड आ गया, सो पीपल स्टार्टेड मेकिंग 30 सेकंड वीडियोस, 60 सेकंड वीडियोस। इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम रील्स आ गया। अब रील्स सबसे पहले, इफ यू रिमेंबर, 15 सेकंड का होता था। फिर 15 से बढ़ के 30 में हुआ, 30 से बढ़ के 60 हुआ, 60 से बढ़ के 90 हुआ, राइट? सो नाउ पीपल आर जस्ट कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कि हाँ ठीक है, चलो रील्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। पहले के जमाने में आई थिंक 3-4 साल पहले तक, और इनफैक्ट 3 साल पहले तक, आई थिंक आईजीटीवी हुआ करता था। अब आईजीटीवी का कॉन्सेप्ट चला गया, राइट? पीपल यूज्ड टू मेक 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लॉन्ग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अब आईजीटीवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 30 सेकंड में तुम या तो वो कच्चा बादाम देखो या तो आगे बढ़ो, राइट? देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू essentially focus on, राइट? तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल रहा है। नेक्स्ट क्या चलेगा, नोबडी नोस। रील्स आया, रील्स आने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया, सो एवरीबॉडी इज नाउ अब जो रील्स बना रहे हैं वो सेम शॉर्ट्स में पोस्ट कर रहे हैं, वहां भी ट्रैक्शन मिल रहा है। सो you need to keep reinventing as somebody, as a creator, क्योंकि पॉडकास्ट का ऐसा है दैट अब पॉडकास्टिंग लोग जो रोगन को भी सुनते हैं, जो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट करता है, और 20 मिनट का भी पॉडकास्ट सुनते हैं लोग, 10 मिनट का भी पॉडकास्ट सुनते हैं, सोलो पॉडकास्ट भी सुनते हैं, वन गेस्ट एंड वन होस्ट भी सुनते हैं, मल्टीपल होस्ट एंड सिंगल गेस्ट भी सुनते हैं, 4 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रूम एंड डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक भी सुनते हैं, और सोलो भी सुनते हैं, राइट? सो यू नीड टू फिगर आउट what you are most comfortable with and what kind of content you can create. So I think as a creator, जैसा मैंने बोला, आपको reinvent करना चाहिए। And podcast यार, मेरे मतलब I spoke to a lot of people, among my friends, among my creator friends, among my other friends who watch my content, and that's when I asked them, यार, do you think I should do a podcast? Do you think I am a good conversationalist? And they said, yeah, you should do a podcast because A, you have a good voice. I said, okay, thank you. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बोलने के लिए। Secondly, they said that I think you can hold a conversation, and I think podcast सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जरूरी एक पॉडकास्टर के लिए ये होता है कि आप कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछा और आपने उसने आंसर दिया और बस आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। द आर्ट ऑफ पॉडकास्टिंग जो मैं भी सीख रहा हूँ विद ईच पासिंग एपिसोड इज, आपको क्वेश्चंस पूछना है और आंसर्स का वेट करना है, एंड देन नॉट डायरेक्टली शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट pick whatever that person answered and go deeper and ask relevant questions based on that question also. So it looks like a normal conversation. It doesn't look like कि वो robotic sound नहीं करना चाहिए। Question answer, question answer, question answer, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, right? This is a conversation, so this needs to be very natural. So that is something that I learned and I am learning as and when I'm doing podcast. So it's like a reinventing exercise कि हाँ ठीक है, चलो ये करते हैं, let's try and do this. So yeah, as a creator, you have to reinvent. So this is just a reinventing exercise, and we've launched the first episode last Friday. As we speak, tomorrow the second episode goes out. So जब तक आपका ये episode live होगा, तब तक मेरा second episode live हो चुका होगा. And I think people must have watched that second episode as well. So yeah, whenever you're watching my episode, please go follow the Chillar on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, everywhere. But yeah, that's the entire idea. That's great because मैंने भी जब शुरुआत की थी, I started working on podcast in 2021 September maybe, and I released my first episode in 2022 January. So the whole work process and the whole execution process, मुझे एक बात समझ में आई कि पॉडकास्ट ऐसे जनरली बहुत लोग नहीं सुनते, बट हाँ, देयर इज अ चंक ऑफ पीपल who are into this, and say I am a big fan of conversations, so I
love doing conversations and having and listening to conversations. तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि podcasting is just my thing. So yeah, that's the ओके thing. Yeah. सही है यार मतलब आई थिंक टू ईच इज ओन जिसको जिसके लिए जो ठीक लगे आई थिंक इफ यू थिंक दैट यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन देन आई थिंक पॉडकास्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू if you think that you're good at writing then I think creating LinkedIn content or writing a blog or starting a blog on Medium or blogger.com makes sense for you. If you feel that audio is your thing, if you feel that you're a little scared of putting yourself out there in terms of video, then you can do an audio podcast only as well, right? Zoom पे करने की दरकार नहीं है. Just get on a call, do a audio only podcast and upload it on Spotify and Apple and Google, right? So to each their own यार जिसको जो ठीक लगे. But I think eventually अगर आपको कंटेंट करना है तो फिगर आउट कर लो कि आप किस में अच्छे हो. बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं यार वो आई एम अ लिटिल कैमरा शाय, हाउ डू आई क्रिएट कंटेंट. नहीं भैया, बहुत सारे मीडियम है. टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, ग्राफिक्स भी है इनफैक्ट. So you can also create graphic content, create image content, carousels बना सकते हो. You can do memes. Memes आजकल काफी चल रहे हैं. Meme marketing बहुत होती है where you can create a meme page and grow that account, and then you can start monetizing your meme page also. So I think memes is something that a lot of people in cash on. Or meme marketing has become a form of marketing, legit become a form of marketing where um, companies are spending amounts on meme marketing. राइट तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. That's the case. Just you have to figure it out how you want to do it, and that's how you do it. So who have you interviewed so far? Okay, so talking about me, our channel, we have particularly we have 10 episodes right now. So Okay. yeah, so we have couple of people who are from industry. Like there was one Mayur Puri, who is a screenwriter. So he is one of the best screenwriters in the industry. Then we have uh, Arshad Ahmed Sahab, who is he was a guitarist of Jagjit Sahab. So he was associated with Jagjit Sahab for over 32 years. So that was, Oh, okay. yeah, he was the one. Then we have Vayu Srivastav, who is a lyricist. So he was there. Then we have Richa Agrawal and Shreyas Bajoria, and a couple of more people are there. So we have a couple of people here and there, and we are experimenting with different people, and we are experimenting with different fields. So let's see how it goes now. Okay, okay, interesting. All the very best to you. Thank you so much. Thank you. Okay, so coming to the next question, I'm very sure that being in this journey must be an amazing experience for you also. So apart from your parents, who is that person or what is that relationship that has kept you grounded and has supported you? I think your core friends, मतलब जो because आप कुछ भी कर लो, whether it is content or entrepreneurship or working a 9 to 5 job, आप भले ही दुनिया की नजर में बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, बट आप अपने दोस्तों से जब तक गाली नहीं खाओगे ना तब तक आपको वो वो मजा नहीं आएगा कि अरे यार क्या यार ये तो बहुत ऐसे फॉर्मल होके बात कर रहा है. मतलब सो आई रियली वांट एंड दैट्स व्हाट हैपेंस अमंग फ्रेंड्स, राइट? सो यू एक गाली आप खाओगे दोस्तों से और आप आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो ये क्या बिजी है तू साले, ये सब क्या कर रहा है, बकवास मत कर, right? So I think my friends have always the kind of people around me have always kept me grounded that way. There have been times where um, you know we've tried to do like I've tried to shut everything off and just focus on work. Um, but there are a certain number of people, or like I can count my friends on my palm. That's the number of friends I have. But those friends are very tight. Like those friends I know will stand up for me whenever possible. So I think those people have really helped me and stayed with me through the course of time because they have taught me like a lot of things and they've stood by me over like I think a lot of years. Yeah, 10 12 साल हो गए. A couple of friends. So some have stayed from school. Some I met in college, and it's been like 7 8 9 years. So yeah, I think
योर कोर सेट ऑफ फ्रेंड्स, दो तीन लोग जो होते हैं ना, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वो तुम्हें गाली देके बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है साले, बकवास कर रहा है। सो दे विल टेल यू, दे विल कॉल अ स्पेड, एंड दे विल टेल यू कि भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम ठीक करोगे। दे विल नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट बाय सेइंग ओ अच्छा लगा, ये लगा, बहुत अच्छा लगा, ये वो सब वो नहीं बोलेंगे। वो सब दुनिया बोलेगी कि ओ अच्छा लगा, ओ वेरी गुड, ये वो। बट योर कोर फ्रेंड्स विल अब्यूज यू इन योर फेस एंड टेल यू कि यार दिस इज वेरी गोइंग रॉन्ग, रेक्टिफाइड, वरना गड़बड़ होता रहेगा। सो एंड यू नीड दोज फ्रेंड्स हु आर ऑनेस्ट ऑन योर फेस, because that's what will keep you grounded. So I think those, I have a couple of friends, and those people have kept me grounded. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का ना लाइफ में होना बहुत जरूरी है बिकॉज जैसे जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं देयर इज अ space where we feel lonely or where we feel void and in those spaces they come and just fill it up over there. Yeah, absolutely यार, मतलब इनफैक्ट मेरे मतलब नए दोस्त अभी, क्योंकि आई एम लिविंग इन अ न्यू सिटी राइट नाउ, सो अभी मेरे कुछ नए नए दोस्त बने हैं। बट आई थिंक आई ऑलवेज हैड द सेम ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब नो न्यू फ्रेंड्स। मैं अब पक चुका हूं उनसे, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टे विद देम बिकॉज दे आर टाइट, लाइक आई एम वेरी टाइट विद देम। सो बट यू नीड दोज फ्रेंड्स, राइट? यू नीड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप 100 दोस्त 100 दोस्त को रख लो बट वो कोई मतलब के नहीं है, वर्सेस 5 दोस्त जो आपके बहुत मतलब के हैं। So you can do the math there. But I think you need those set of people. अगर आप गलती कर भी रहे हो तो भी आपको वो मुंह पे बोलेंगे कि देख भाई गलती कर रहा है तू, ये तो दुनिया के सामने भले ही हीरो बन जा लेकिन तू ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है, इसको ठीक कर। And when they say that, I think that's when we realize कि okay, you know, ये कोई ऐसे फैब्रिकेट नहीं कर रहा मेरे को, ये बता रहा है मेरे को कि देख भाई गलती कर रहा है तो ठीक कर ले इसको। सो एंड आई ऑल्सो टेल द सेम थिंग टू देम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आई एम ऑन द रिसीविंग एंड, आई ऑल्सो से दैट टू देम कि यार देख भाई, देख ब्रो यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, या देख देख यार, मतलब व्हाटएवर, तू गलती कर रही है इसको ठीक कर, मतलब ये गलत कर रही है तू, इसको ठीक कर, ये सही नहीं है। बिकॉज दैट इज समथिंग दैट those kind of friends are more important than the friends who only appreciate you कि ओ वेल डन दीपक, ओ कंग्रेचुलेशन दीपक। नहीं नहीं यार, वो भी चाहिए, बट आई थिंक यू नीड रियल फ्रेंड्स हु विल टेल यू ऑन योर फेस कि तू गलत कर रहा है, उसको ठीक कर ले। I think when you are on social media, you're talked about validation. So I think validations तो अपने आप मिल जाता है आज के टाइम में. You don't have to beg for it. It's just there, like in views, likes, and all of that. But gripping on those friends, I think that's the best part, and that's the most important part right now, maybe. हाँ यार, हाँ यार, मतलब वैलिडेशन तो चलो ठीक है, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। वो तो आप नहीं खोजो तो भी आप कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बट आई थिंक फ्रेंडशिप का ऐसा है कि जैसा मैंने बताया, वो सच बोलने वाले और मुंह पे बोलने वाले दोस्त बहुत जरूरी है, देन द पर्सन हु विल टेल यू कि नहीं यार सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा हो ही नहीं सकता ना यार, हर बार सब अच्छा कैसे हो सकता है? तुम कहीं ना कहीं तो गलती करोगे ही करोगे। तो वो गलती स्पॉट करना और तुम्हें बताना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम गलत चले जाओगे, वो जरूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये कि ये बात आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, बट क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार, पेरेंट्स और हमारे में एक जनरेशन गैप है तो वो समझ नहीं रहे हमको। लेकिन अगर सेम बात हमें आप मेरे हमारे फ्रेंड्स बोलेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रही है, इसका बात सुन लेते हैं। तो ये बड़ा डिवाइड है, बड़ा डिवाइड चलता रहता है और बड़ा टसल चलता रहता है कि यार सेम बात अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे, बट सेम बात अगर दोस्त बोल देगा कि नहीं ब्रो ये मत कर, तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे मेरे लिए बोल रहा है। Correct, correct, absolutely. This is the last question of this talk session. Then we'll move to the rapid fire type of section. That's ओ just रैपिड फायर भी है, अच्छा, ओके। okay. So you have been invited to many prestigious platforms such as IIT, IIMs, TED Talks, and all. So according to you, just like nowadays, there are many people who who don't know what to do and how to do. Like all of us.
on the same page, I think. So Mhm. nowadays, what is that one belief that you have realized among the people that has made them more vocal about that what they want to do exactly in their lives? I think the question is a little unclear. Can you rephrase the question a little bit? Okay, so my question, it's a very ongoing question. It's just कि आज के टाइम पे आप हम बहुत Hmm. सारे लोग देखते हैं जो जिन्हें पता है कि नहीं करना है क्या, because you go to these platforms where you have audience like that. So उस टाइम पे Hmm. कि ऐसे कौन से मतलब ऐसा क्या बिलीफ आपने उन लोगों में देखा कि जो जिससे वो एकदम क्लियर है कि हाँ ठीक है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, they are more vocal about these things. अच्छा. सो यार जितने भी इंस्टीट्यूशंस आप चले जाओ, वेदर इट इज आईआईटी, आईआईएम और एनी अदर स्कूल और कॉलेज और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन यू गो टू, आई थिंक यू विल ऑलवेज हैव दिस डेमोग्राफी जहाँ पे टॉप 5% है उसको सब कुछ पता है, Hmm. बॉटम 5% है उसको कुछ नहीं पता, राइट, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में, Hmm. तो वो तुम्हारी ऑडियंस नहीं है. टॉप 5% है उसको सब कुछ पता है, वो भी तुम्हारी ऑडियंस नहीं है. The middle 90% is your audience who Hmm. are confused. The middle 90% में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग मिलेंगे. अच्छा. एक को समवॉट आइडिया है, Hmm. एक वो कैटेगरी है जिसको समवॉट आइडिया है बट पता नहीं कैसे करना है. एक वो कैटेगरी जिसको एकदम आइडिया नहीं है बट जानना चाहता है कि कैसे करना है. एक वो कैटेगरी है जहां पे उसको ये पता है कि क्या नहीं करना है बट ये नहीं पता कि क्या करना है, Hmm. तो वो भी फिगर आउट कर रहा है या फिगर आउट कर रही है कि चलो ठीक है ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट उसे ये नहीं पता कि नैरो डाउन कैसे करना है एक ऑप्शन में. Hmm. So I think you meet a lot of people, and but the bottom or but the middle 90% is your audience. So you speak to them and then you realize, because आजकल के जमाने में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, there is nothing that cannot be looked up or searched on, right? चैट जीपीटी है, आप कुछ भी पूछना आप चैट जीपीटी से पूछ लो, right? Anything that can anything on which you will need information can easily be looked up, Hmm. right? um, और आज के जमाने में अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो इट इज टोटली बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, बिकॉज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए. लिटरली वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एंड स्टिल मेक मनी. मतलब पॉडकास्टिंग से पैसा बन सकता है, कंटेंट से पैसा बन सकता है, स्पीकिंग से पैसा बन सकता है, राइटिंग से पैसा बन सकता है, डांस से पैसा बन सकता है, म्यूजिक से बन सकता है. वट एवर इज योर टैलेंट, कैपिटलाइज ऑन दैट, गो ऑल इन, और उससे पैसा बन सकता है. बट इफ यू आर स्टिल अनेबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक मनी इन दिस टाइम इन एज, then I'm sorry, something is wrong with you. And I'm being very honest here. I will not say कि ओ नहीं हो सकता है कुछ फिगर आउट कर लो. नहीं भैया, तुम्हारे में गलती है, तुम फिगर आउट करो. बिकॉज इतना सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, इतना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इस उसके बावजूद अगर तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो तो तुम्हारे में गलती है ना यार. तुम ठीक से नहीं स्पॉट कर पा रहे हो अपॉर्चुनिटी. इंटरनेट हर सबके पास अवेलेबल है. तुम दिन भर स्क्रॉल करते रहोगे इंस्टाग्राम पे, और तुम रील्स देखते रहोगे और शॉर्ट्स देखते रहोगे, और तुम बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम तो है तुम्हारे पास, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिंपल, राइट? सो आई थिंक you I have met like a lot of people through these um, institutions and organizations, but I think people are very vocal about it, and more so because social media आ गया, तो you have a platform where they can start talking about it. पहले तो बात भी नहीं होती थी, because कहाँ बात करें, right? You Correct. understand कि social media start क्यों हुआ था, और how did social media come to existence. The earliest I can think of is an Orkut. I don't know if you know what Orkut is, but Orkut था पहले, राइट? पहले याहू मैसेंजर था, वो वहां पे गूगल चैट था, गूगल चैट पे लोग बात करते थे, राइट? ब्लैकबेरी मैसेंजर था. तो वो सब चीजें थी एज सोशल प्लेटफॉर्म्स. फिर फेसबुक शुरू हुआ, मार्क जकरबर्ग थॉट, एंड मार्क जकरबर्ग का आइडिया ये नहीं था कि he wants to connect the world on a global platform, on one single platform. His only idea was that he was at Harvard and he wanted all the students to know each other. Hmm. So he wanted to build an online community of people where every Harvard student knows the other student, and that was his idea. So he built a platform for himself,
because he faced a problem. It was his personal problem that he was facing. Eventually बहुत बड़ा हो गया because then he thought कि नहीं यार, मैं इंडिया में बैठा हूँ, if I want to connect with somebody in America I can do that. And that's how Facebook happened, that's how LinkedIn also happened, that's how Twitter also happened, and that's how other social platforms are happening, right? So because social platforms hai, now we have so much to talk about. We have so much जहाँ पे हम एटलीस्ट ये सब टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं. पहले तो बात करने का भी चांस नहीं था, राइट? सो आज के जमाने में अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपको जॉब नहीं करना है, मत करो. बी अ रेबेल, घर से भाग जाओ, ये करना जो करना है करो, फॉर योर पैशन जो भी करना है. बट if you are not able to make money with whatever you want to do, then I think the fault lies in you. करेक्ट। तुम्हारे में प्रॉब्लम है. And everybody feels lost. I've also felt lost. Even I, till date, I don't know what I want to do in life because your thoughts keep on changing. It's a phase, right? आज मेरे को मजा आ रहा है करने में, कुछ कल मेरे को कुछ किसी और में इंटरेस्ट आ जाए, I'll start doing that, right? But eventually आपको एक चीज पे अड़े रहना पड़ेगा और वो फिगर आउट करना पड़ेगा, और वो फिगर आउट तभी होगा जब आप 5 चीज ट्राई करोगे. और ये 5-6 चीज ट्राई किए बिना नहीं हो, नहीं नहीं होगा. मतलब मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ वो नहीं होगा, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हाउ इट वर्क्स इज यू ट्राई आउट 5 different things and that's when you realize कि ओ, इसमें मेरे को सक्सेस मिला और इसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिला. नाउ आपको फीडबैक लूप इंटीग्रेट करना पड़ेगा. जब तक फीडबैक लूप नहीं डाला है आपने, तब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप योर से सेंडिंग आउट DMs to 100 people फॉर योर पॉडकास्ट. अब आप बोल रहे नहीं यार, 100 लोगों को मैंने DM कर दिया, किसी का रिप्लाई नहीं आया, और आप सेम टेम्पलेट यूज करके 500 लोगों को और भेज दिया. तो वो आप में गलती है ना, क्योंकि आपने फीडबैक लूप नहीं लगाया. आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अगर 100 लोगों को आपने DM किया और अगर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपके DM में प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं होगा कि 100 लोगों को आपने मैसेज किया और किसी ने वो मैसेज नहीं पढ़ा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. 10 लोग नहीं पढ़ेंगे, 20 लोग नहीं पढ़ेंगे, 50 लोग नहीं पढ़ेंगे. 51% तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, भले ही वो पढ़ के ना बोल दे. योर इंटेंट इज कि आपका मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, DM खुला है कि नहीं खुला है, वो सीन लिखा हुआ आया कि नहीं आया. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? 51% खोलेगा ही खोलेगा वो मैसेज. अगर 100 में से कोई भी नहीं खोल रहा, देन प्रॉब्लम आप में है, आपने मैसेज ठीक से नहीं लिखा. तो फीडबैक लूप इंटीग्रेट करो, वो डालो कि मैसेज ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक पर्सन को रीच आउट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या DM सही तरीका है रीच आउट करने का, क्या ईमेल करना चाहिए, ईमेल नहीं करना चाहिए, तो किसी को रेफरेंस खोजना चाहिए जो इस बंदे को जानता है. मे बी द पर्सन इज वेरी बिजी ऑन Instagram बट इज नॉट वेरी बिजी ऑन Twitter. लेट्स रीच आउट टू दैट पर्सन ऑन Twitter, राइट? तो वो चीज वो फिगर आउट करना जरूरी है. बट फीडबैक लूप इंटीग्रेट करो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, एंड यू कैन यूज दैट इनसाइट to now reach out to 500 more people and get more responses. करेक्ट। But I think social media एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको, जहाँ पे anybody can become vocal about it, and start talking about what they want to talk about. For example, a classic example is mental health, right? When people talk about कि वो mental health है, ये है वो है, पहले तो कोई बात ही नहीं करता था. Now, because social media hai, there are so many organizations who are creating content on mental health. Now we know कि यार mental health is so important. Yeah. Right? Now we know that it's important to take breaks. तो वो जरूरी है वो चीज करना. So I think you meet like different people in different organizations, but I think what is really important that you figure out, और वो हो जाएगा figure out. मतलब वो क्रैक होगा ही होगा, वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा क्रैक. क्रैक होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, बस यही है. मोस्ट पीपल गिव अप वे टू सून एंड डू नॉट इंटीग्रेट फीडबैक लूप्स, एंड दैट्स व्हाई दे फेल. अगर आपको ग्रो करना है, आप रियलाइज करो कि आप जिस चीज में फेल हुए हो, या तो आपने ऑल इन नहीं दिया, यू हैव नॉट गॉन ऑल इन, और या तो आपने फीडबैक लूप नहीं लगाया. ये बहुत जरूरी है. आप देखना अपने लाइफ में भी, आप जहां पे आप शायद पहले फेल हुए हो, तो आप उसमें लुक बैक करना और देखना
आगे भी जो चीज करोगे उस पर ध्यान रखना. एंड दिस इज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. Whatever you have failed at in your life, chances are, and chances are that it's you failed because either you have not integrated feedback loop into it, or you have not gone all in. अगर होल होप करके आप घुस जाओगे ना उसमें आंख बंद करके, नो मैटर व्हाट, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को तो बस एक ही चीज दिख रहा है और वो है वॉट एवर यू आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए पॉडकास्ट है. अब मेरे को दिख रहा है पॉडकास्ट, मेरे को ये पॉडकास्ट ही करना है नो मैटर व्हाट. My aim is to get Shah Rukh Khan, Narendra Modi, Salman Khan on the platform on my podcast. I want to get, say, Joe Rogan on the platform. I want to get everybody on the platform. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Let's do that. हाँ, easy नहीं है, time लगेगा, but वो that madness is important. वो पागल होना पड़ेगा. If you're not mad about it, I don't think it's going to work. And most entrepreneurs are obsessed, are just simply obsessed people. Either they are obsessed with customers, or they're obsessed with problems, or they're obsessed with them solving the problem. They're obsessed with the solution. Ki, haan, this is something that we as a startup can solve. This is how startups begin in the first place, because they're obsessed to solve that problem. Uber कैसे स्टार्ट हुआ? फाउंडर को प्रॉब्लम फेस हुआ, राइट? व्हाट्सएप कैसे स्टार्ट हुआ? It's just out of personal problems. So I know थोड़ा लंबा आंसर हो गया, but to cut short, feedback loop integrate करो, go all in, because the world rewards the brave and the world rewards the courageous. तो वो थोड़ा हिम्मत रख के all in जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको दुनिया वो रिवॉर्ड और वो मेडल देगी कि हाँ ठीक है यार, इस बंदे ने मेहनत किया, चलो इतना तो बनता है. हम शुरू शुरू में बात करते ना, वो एक डोर खोलेगा तो दूसरा, एक डोर बंद तो दूसरा डोर खोलेगा, ये वही है, ये वही कॉन्सेप्ट है. सो आई थिंक इंटीग्रेट दैट फीडबैक लूप, गो ऑल इन, एंड be completely mad about it, like be obsessed about it. And only then you'll be able to get that success. Otherwise, yeah, I don't think, because ये सब करने के बाद अगर आपको जब सक्सेस मिलेगा ना, तो आपको राहत की नींद आएगी. तब लगेगा हाँ यार, मतलब जड़ के मेहनत किया और उसका रिजल्ट मिला, अब आराम से सोते हैं. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन का बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने, बट आई थिंक that's the gist of it. But मेरे को ऐसा लगता है कि is because this question was very simple, but the thing I think the answer you gave will help a lot of people who are trying to do something, who are just gripping on things like, or who are experimenting with things they are in. Right. Okay, so that's all for our talk section. Coming to the rapid fire section, there are 6 to 7 questions, and I'll ask, and you have to answer it in a word or a sentence as you want. Okay. चलो ठीक है. Okay. First question: how would you explain yourself in 2 words? Funny and ambitious. Right. If not content creation, then what? Interesting. Building a business for sure, that I'm still doing along with becoming a creator. So yeah, building something, building a business for sure. Okay. So yeah. One moment that you want to live again. One moment that I want to live again. Oh wow. ये रैपिड नहीं होगा because ये मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा. One moment that I want to live again. It's a good question. Interesting. क्या हो सकता है? Probably my first public speaking experience. वो वापस करना है. Okay. Because I was pathetic और मैंने पूरा हक दिया था उस पर, तो मेरे को वो करना है वापस. Maybe it'll be fun doing that again now. I think that's not only you. I think we all are on the same page in that sense. सबका yeah. सबका एक ही हाल है. पहला तो मैं बताऊं तो मेरा तो ऐसा हाल था. I was in school that time and I was just giving some anchoring about something.
तो आई वाज लाइक कि मैं तो बीच में ऐसे बोलती एक्सक्यूज मी फुल ऑन टू फुल क्राउड आई जस्ट एक्सक्यूज मी आई वाज जस्ट फिर मैं जब उतरी वहां से मैं बोली कि ऐसे कौन बोलता, मैं सीधे बोल के तो आ सकती थी, एक्सक्यूज ही बोलने का क्या जरूरत। So it's Exactly, exactly. So I'll probably want to relive that moment. अब जाके अगर वो relive करूँ तो बहुत interesting होगा. yeah, I'm So sure. yeah. Okay, how your playlist look like? Oh, wow. I think there is a movie. I'm forgetting the name of the movie. और उस movie का एक dialogue है कि you can tell a lot about the person from his playlist. Hmm. So मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो लाइन नाउ दैट यू मेंशन प्लेलिस्ट बट आई थिंक मेरा प्लेलिस्ट तो बहुत मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड है यार मतलब मैं पंजाबी गाने भी सुनता हूँ आई लिसन टू अ लॉट ऑफ English songs as well. I listen to a lot of सूफी मेरे को सूफी बहुत पसंद है सो मैं जावेद बशीर साहब जो सिंगर है मेरे को बहुत पसंद है उनका ये गाना ये तूने क्या किया वो बहुत पसंद है लाइक वन ऑफ माय क्लोजेस्ट सॉन्ग्स एंड एंड या कवाली कवाली मेरे को बहुत पसंद है आई रियली एंजॉय व्हेन आई लिसन टू कवाली or when I'm seeing like a live performance, even on TV, I think मेरे को बहुत पसंद है यार मतलब सूफी कवाली I don't listen to a lot of EDM मेरे को वो ऐसे बहुत like it's noise to my ears, it's not music to my ears. But Kawali, Sufi, um, mm, Arijit Singh, all time favorite. I don't think there's anything that he can't pull off. Like he's pulled off like he's the top notch singer at the moment right now. So that's what my playlist looks like. Great, interesting. A habit that keeps you happy. Oh, for now, working out for sure. Because अब मैंने ये लेट करने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को जिम जाना था. So I came back, freshened up, and then I thought कि ठीक है इसके बाद करेंगे. Because this is a personal habit that I've tried to stay consistent on. I've failed going to the gym consistently before और मैं जा नहीं पा रहा था. But now I realize that it's very important to take care of your health. Make it a point to move your body at least once during the day. Maybe go for a walk, maybe dance. जरूरी नहीं है कि आपको weight से lift करना है. You can run on the treadmill, you can run in a park, you can jog around, you can go for a walk, you can dance, you can lift weights, you can do whatever. Just move for an hour in a day. It will not only help you physically, but mentally you will be in a very good spot. Okay. So that's very important. Yeah. Okay. A memory that you could recall from your college days. Lots of memories, yeah. Again, I think because I was participating in a lot of events, और एक इवेंट में हमने बहुत मैसअप कर दिया था पूरा और एंड मोमेंट हमें रेक्टिफाई करना पड़ा था कि ये गलती हमारी थी हम बस ब्लेम कर रहे थे किसी और पे तो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज यार वी memories about bunking in college or doing mass bunks and then realizing कि you're the only one who has bunked the rest of the class has just attended college तो मतलब काफी दगेबाज लोग मिले हैं कॉलेज में बट या लॉट्स ऑफ मेमोरीज यार ऐसे तो गिनाने में बहुत टाइम लग जाएगा बट आई थिंक द टाइम्स वेयर आई participated in events or I was a part of the college cricket team as well so वो college की cricket team के भी काफी सारे अच्छे memories है so yeah I mean good memories from college. Okay. Last question. A person you want to tag here who can come to this podcast. Oh, interesting. तब जाके now I know why Richa and Shreyas have mentioned my name. uh, a person who should be on the podcast. From any field. From any field, अच्छा, okay. Yeah, I don't know. Maybe get a poet or get a dancer on the show, get his or her perspective. मतलब I can take names, but
it only boils down to you getting that person, or maybe do an offbeat podcast, like not just get creators, entrepreneurs, poets, etc., but maybe do an episode with, say, an auto rickshaw wala. Maybe do an episode with, say, your home staff or housekeeping staff or maid or whatever. Maybe do an episode with him or her, right? Because वो कोई नहीं कर रहा, राइट? वो किसी ने आज तक नहीं किया है, और क्यों नहीं कर रहे मेरे को नहीं पता, because we have planned this. We will get such people on the podcast as well. So I can take names, and you might do podcast with them, but I think थोड़ा सा अगर offbeat करना है तो maybe get these people on board, because वो बहुत interesting perspective निकल के आएगा और वो बहुत raw होगा. Absolutely. So maybe get those. That's pretty interesting also, because none of us, the guests I have, none of us mentioned this ever, and I think that's something pretty, cool, maybe. Absolutely करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए यार. आप करो, वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आएगा, क्योंकि उन्होंने भी ये पहले आज तक नहीं किया होगा, तो वो भी थोड़ा नर्वस होंगे, राइट? बोलने में कैसे बोलना है, क्या बोलना है. आई डोंट नो इफ योर ऑडियंस लाइक्स हिंदी और इंग्लिश. वो किस तरह से बात करे, बहुत रॉ निकल के आएगा, मतलब बहुत डिफरेंट निकल के आएगा, तो ऑडियंस को एक नया फ्लेवर मिलेगा. सो ट्राई दैट, मे बी अच्छा निकल के आए वो. Amazing. Chalo. That's all for today's episode. Thanks to you for coming, and thanks to all the audience who are here watching this episode. Do you want to do the ending? You can do the outro, yaar. I would want to listen to your outro. आप कैसे करते हो? I'll listen to your outro. Okay. Thank you to all the people who are listening right now, and thanks to Deepak, you. Thank you for being here, and it's an amazing experience for me too to be here. And yeah, all like and share to the channel, and please listen to Deepak's podcast, the Chilla podcast. I'll tag the link in the description box. Thank you so much. Arey, amazing. Thank you, Sonal. Thank you for having me. It was actually fantastic. Actually went back down the memory lane, spoke a lot about what happened in my life, maybe 15-20 years back rather. तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा बात करके. Thank you so much for having me on the show. And yeah, subscribe to Sonal's channel. Subscribe to, what's it called? Gupshup. Gupshup with Pals. Gupshup with Pals. So please subscribe to Gupshup with Pals. Subscribe to Sonal's channel. अब इतना देर सुन लिया तो मेरे को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना. And thank you for having me. Thank you.